Okay. Okay, please everyone try to mute yourself. As if you're required to ask something, please go on and you can unmute yourself. But till that time, please make yourself as a mute. Okay, so other may not get distracted or other may not get any problem regarding your background voices. Now, this session is particularly, as I said, is specifically, yeah, this is what it is in front of you. Yeah. So this session is specifically based on data analytics and analytics with integration. Now, integration means we are going to integrate with Power BI, Excel, SQL, and Python. Okay. So overall, this would go around 2 to let's say 2.5, or in specifically because there is no 2.5 here, but let's say 2.5 month of course. Further means 2 months and further half month would be required. So for specifically 2 months, we'll be taking you through all the theoretical part, practical part, and then again, lots of details are there with assignments and practices would be mock interviews would be there. But again, for a half a month, it would be specifically for project. It will be specifically for project. Okay, so you're not going to get only through a theoretical, but you will also go through a hardship of how project works in a real life. Okay, now before starting this, this is being created by Arbor Academy, this particular session or this particular course, which is especially made in a basis of understanding what is your industrial requirement as of now. Okay, what are those particular skills that are required? What are those skills that have been required as in every industry? Not I'm talking about not only for let's say production, mechanical, electrical, IT, or any specific industry, but anywhere in an industry. Because nowadays, as you must be knowing that, or you might have already observed that, data is a fuel. Data is nothing but it is a fuel. Okay, for any company, it is a fuel. So this fuel, whoever can control or whoever knows how to work with that, yes, then it is the best. Okay, so any message? Okay, there are still people who want to get admitted. That. Okay, so as I said, I was saying that this is data analytics integration. Now, many of you might Hello. already be knowing, or many, yeah, who's there? Sir, your voice is not come properly, sir. Sir, your Okay, voice just is one second. breaking. Okay, just one second. Is it for everyone or for Chetan and this? Is it for everyone? Guys, can anybody confirm? Is it for them only or specifically? Not so clear. Distracting. Okay, fine. Is it now okay? No. Okay, can you confirm this? Is this now okay? Your internet connection is poor, sir. Okay. Yeah. Some background noise is coming right now. Think so. Is it okay now? Yeah, better than before, Deepak. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Okay, so as I was saying that this particular course is being provided by Arbor Academy. This Arbor Academy is specifically, as you must be knowing, that specialized for placement. Okay, for placing a particular person in a particular role.
So what they have gone through is that they have did some analysis and done some analytics where they know they get this knowledge that people who may acquire knowledge of Power BI, Excel, SQL, and Python. This is a particular requirement. If you go through any JDs, job descriptions throughout the industry, throughout the requirement, you might notice that these are the basic requirements which are being asked. So what we have planned is that we will make use of, or we will create a particular course that in which you will understand Power BI also, Excel also, SQL also, and Python also. Okay. Now this is course which is specifically for, as I said, 2.5 months, where 2 months will be particularly for your training, for introducing you for the theoretical, for application in industry, what are the process, how they are being done, all those details. After that, for further half month, you will be only focused on projects, mock interviews, and in such particular things. Till 2 months, you will have assignments from all the works that have been placed. Okay, now, with this said, let us start with a small introduction of myself. There I am. Now, throughout the path or throughout the journey, we are only and only going to work on this data pre-processing. On this data pre-processing. And then you must say why we are much focused on this data pre-processing. See, to be frankly, within 2.5 months of duration, it is pretty much impossible to master any of a tool. I said that there's no problem with that. But see, throughout this, what we are going to say is that, let's say, for example, Python, if we take as a small detail, Python as a concern, we are not going to get mastered over here. What we are going to do is that, see, Python has different uses. For example, creating UI, for data analytics or data science, for creating apps, applications, and so on. Multiple uses are there. What we have done is that we are going to take Python in only and only data analytics perspective, which means all of the Python is not required, but yes, for data pre-processing or to become a data analytics, whichever is required, we are going to focus on that particular thing. In that sense, same principle is applied for all of other tools. Okay, and in that, data pre-processing is a process or particularly a step that has been mostly required for any data analytics as a skill. Okay, so we are going to work on this particular skill only. Now, who I am? I'm over here. This is myself, Deepak Bhatlavante over here, who is a data analytics, a data scientist. Okay, so I would like to say that I have more than 8+ years of experience in different industries also, and then further, still I'm gaining an experience in data wrangling, data pre-processing, data munging, and all these details in data analytics and data scientist. So yes, you can say that I have a pretty much good experience with different projects handled. To specifically say about project, I have worked on, let's say, I would like to highlight specific projects which have been used for predicting crops for हेलो upcoming months. Yeah, हेलो हाँ सर अनिल yeah, बात yeah. कर रहा हूँ आपका हाँ, आवाज बोलिए. ठीक से नहीं आ रहा है हेलो Okay, okay. सुना मैंने. Actually ये सिर्फ अनिल जी के लिए है या सबके लिए ऐसे ही हो रहा है? क्या you please confirm everyone? हो सर अभी ये थोड़ा सर बीच में कट रहा है वो मतलब कुछ क्लियर नहीं अच्छा, आ मेरे रहा भी आवाज नहीं आ रहा है Okay. सर हेलो Okay, one second. ओके, क्या अभी ठीक आ रहा है?
आपके लिए है सर। Yes, sir. ठीक Now है। you are properly audible. अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो माइट बी ये मेरे ख्याल से शायद हेडफोन का इशू है। ठीक है, फिर छोड़ देता हूँ मैं। ओके फाइन, ऐसे फीडबैक देते रहिएगा कभी कुछ इशू होता है तो, ताकि मुझे समझ में आए। दैट्स फाइन। ओके, सो जैसे मैं आपको कह रहा था कि यस, मैंने स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रिडिक्टिंग क्रॉप्स। मतलब क्या करते हैं कि आगे आने वाले 3 से 4 मंथ की कौन से सबसे बेस्ट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस में, आरओआई के बेस में, कौन सा सबसे बेस्ट आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगा, आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए। दिस वाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर फील्ड। then again I have done on specifically एम्प्लॉय ट्रैकिंग के लिए एम्प्लॉय सर्विलेंस करके प्रोजेक्ट था, जिसमें ये किया जाता था कि एम्प्लॉय को हम ट्रैक करते हैं कि बंदा अगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये उनका टेबल है, हम टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो इस तरह से होता है। यहाँ पे एक चेयर होती है, उनका टेबल ऐसे ऐसे करके उनका लगाया जाता है, लाइक दिस अरेंजमेंट। सो व्हाट अवर वर्क इज दैट, अगर कैमरा आपको यहाँ पे है, यहाँ कौन सी भी कॉर्नर में है, तो वहां से क्या होगा, आपको विजुअल दिखा जाएगा ऐसे, यहाँ पे ना ऐसे आपको दिखा जाएगा। You have to identify whether that particular person is sitting in the chair or roaming around here and there, and how much time he's spending on his desk. That was something which is required. Then again it was a bit, let's say AI neural networks और सब चीजें थे, वो भी हमने किए। Then again with this, बाद में क्या था कि abnormality of birds. Now birds मतलब स्पेसिफिकली मैं पोल्ट्री फार्म में जाऊंगा, पोल्ट्री के फार्म में, जहाँ पे क्या होता है कि जो मुर्गियां वगैरह होते हैं, तो उनको ना चेकअप करना पड़ता है, पर्टिकुलरली ऑब्जर्व रखना पड़ता है। हेल्थ चेकअप तो होता ही है, लेकिन क्या होता है फिर बाद में उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस एक कंसर्न होता है, क्योंकि स्ट्रेस उन पे बहुत होता है। एक तो क्या होता है कि बहुत सारे मुर्गी एक साथ होते हैं, दूसरा जब आप उसको उठाते हो या फिर उसके पास में आते हो, तो क्या होता है, कोई भी चिड़िया स्ट्रेस आ जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। तो स्ट्रेस लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना आपका प्रोडक्शन लेवल, मजाक लगेगा शायद आपको, बट ये होता है, प्रोडक्शन लेवल में बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस बोलो, ये स्ट्रेस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि किसी को देखने से, धूप में रहने से, या कम खाना खाने से, इतना ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेस का रीजन एक और होता है कि कोई डिजीज आपके पास है, इस पर्टिकुलर बर्ड के पास, लेकिन वो डिजीज का रीजन हमें नहीं पता है, और वो क्या है, शायद स्प्रेड होने वाली, जैसे आपने देखा होगा मुर्गियों में बीच में एक प्रॉब्लम आया था ना, जो स्प्रेड होता था। तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसे एट अर्ली स्टेज कैसे रोका जाए, तो हमने क्या किया था, यूजिंग थर्मल इमेज हमने उसे डिटेक्ट किया था। और लेट्स से डिटेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। बॉडी में टेम्परेचर, जब भी आप देखोगे बॉडी में किसी भी तरह का फॉरेन बैक्टीरिया हो जाता है, तो बॉडी क्या होता है, रिएक्ट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे बुखार आता है। तो इन दैट सेंस, if there would be any rise in a temperature which is abnormal, एक particular temperature के above, it will show us in a thermal image, and then we can easily identify that. So again, that is also an image AI थोड़ा बेस्ड, उस बेस में था। तो ऐसे मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स क्लाइंट बेस में हम मतलब भी चल रहा है, और आगे भी कर रहे हैं इसके साथ, और बाकी भी करते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस लेवल में जाना है, बट एटलीस्ट डेटा, उसके लिए जो डेटा चाहिए, उसके लिए जो हमको जरूरी होता है रिक्वायरमेंट्स, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग के थ्रू ही आता है। तो कोई भी आप फील्ड में जाओगे डेटा साइंस में, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग ये बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही है, पकड़ लो। ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। नाउ क्यों करना चाहिए, ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डेप्थ विद दैट, बट यस, मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन से टूल पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन MS एक्सेल, देन सीक्वल। अच्छा, सीक्वल एक डिफरेंट है, माई सीक्वल अलग है, बट सीक्वल एज एन लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑन एनी डेटाबेस। सो सीक्वल भी हम सीखेंगे, एक्सेल भी सीखेंगे, पाइथन पे भी फोकस देंगे, एंड देन पावर BI ऑल्सो। सो ये कैसे चलेगा, देखिए ना, एक्सेल और सीक्वल दोनों डेटाबेस है। ये क्या करते हैं, डेटाबेस के बेसिस में यूज किया जाता है, डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा को यूज करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए। वंस योर डेटा इज डन ओवर हियर क्रिएटेड, हम क्या करते हैं, फिर इसे पाइथन में यूज करते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन। अच्छा, मैनिपुलेशन इज नॉट अ बैड थिंग, ओके, हम उसे यूज करते हैं और सेंस लेते हैं उस तरीके से। अदरवाइज क्या है, एडिटिंग को भी मैनिपुलेशन ही कहते हैं। ओके, सो बस क्या है कि उसको, मैनिपुलेशन को हम पाइथन के लैंग्वेज में उसको जो चेंजेस करना है, जो मॉडिफिकेशन करना है, ऐसा कंसिडर करते हैं। सो पाइथन में हम उसे मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, व्हाट्सो बेसिस से हमको चाहिए वो, एंड देन हम उसको यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए पावर BI पे। अल्टीमेटली पावर BI पे क्यों आते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन, बेस्ड ऑन विजुअल्स, वी आर गोइंग टू डिसाइड, डिसीजन लेना है हमें
हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है ना। स्टेक होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े सीईओज होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन विजुअल जो आपके ऑप्शन है उसमें से हम डिसीजन लेते हैं, करना है नहीं करना है, सेल्स बढ़ाना नहीं बढ़ाना है, क्या रीजन है, देखना है नहीं देखना है, व्हाटसोएवर। ये क्या आपका फिर डिसीजन लेना होता है। तो ये प्रोसेस होता है इसे। सो क्या करेंगे हम, पहले एक्सेल सीखेंगे, सीक्वल सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, पावर बीआई, देन दिस इज हाउ वी विल वर्क ऑन। नाउ डेटा प्री प्रोसेसिंग, मैंने जैसे कहा था कि हम पूरे प्रोसेस में, एक्सेल में भी डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है वो सीखेंगे, सीक्वल में क्या होता है वो भी सीखेंगे, फिर पाइथन में क्या होता है वो सीखेंगे, और पावर बीआई में क्या होता है। क्योंकि देखो चारों टूल्स में जब आप भी काम करोगे ना, तो यही एक पार्ट होगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। कोई भी डेटा सेट आपको दे देते हैं या फिर डेटा सेट फेच करना होता है, उस पर आपको क्या करना पड़ता है, अगेन डेटा प्री प्रोसेसिंग, दैट इज ओनली पार्ट, यही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों टूल पे ये कैसे काम करते हैं, क्या है, वो सब चीजें सीखेंगे। ओके ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, Deepak. Yes. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। जैसे आपने Yes, sir. रिस्पॉन्स दिया तो आई थिंक हाँ अभी कोई इशू नहीं है इंटरनेट कनेक्शन का, दैट्स वेरी गुड। हाँ बोलिए, समवन वाज टॉकिंग समथिंग। Yeah, please, someone who was asking something. I just walked in between, so I need to understand what was that. नहीं, ओके, ठीक है, मेरा वहम होगा। नहीं सर, वो यस So, सर बोलने गई थी शायद, कोई तो भी लड़की थी। okay, okay, ठीक है। So there are steps, specific steps which are being universally worked on. So पहला स्टेप होता है कि पहले इन्वेंटरी डेटा सोर्स, मतलब क्या करना है आपको, डेटा सोर्स जो इन्वेंटरी वो जैसे किसी डेटाबेस से लेना है, कैसे भी करना है, डेटाबेस को कलेक्ट करो। देन फिक्स इट्स क्वालिटी इशू। फिक्स क्वालिटी इशू करना क्या है, क्वालिटी इशू फिक्स करना है मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में क्या हो सकता है कि मिसिंग वैल्यू होगा, जो नहीं चाहिए है ना, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वही नहीं है। कभी कभी डुप्लीकेट हो सकता है, यही चीज जो चीज यहाँ पे लिखे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 डुप्लीकेट होगा वैल्यूज। एक कॉलम जो ऑलरेडी है उसी को किसी ने डुप्लीकेट कर दिया होगा, या एक रिकॉर्ड है उसी को डुप्लीकेट कर दिया होगा, है ना। और चीजें मिसिंग वैल्यूज कैसे रैंडमली हो रही होंगी, या फिर पर्टिकुलर कॉलम में पूरा का पूरा मिसिंग होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सब फिक्स करते हैं। So issue fixing को क्या है, we do in this Python also and other workout also. And then after when we have gone through this data fixing all this thing, जब हमारा डेटा एकदम प्रॉपर रेडी हो जाता है, हम क्या करते हैं, we identify important features. Why important features? Because if you think over data, your data may have 1 2 3 and so on n number of columns. Feature यहाँ पे जो लिखा है, it is nothing but columns. ये डिनोट करता है कॉलम्स को। आईटी सेक्टर में, डेटा एनालिटिक्स के स्पेसिफिक सेक्टर में जाओगे तो कॉलम्स को हम फीचर डिफाइन करते हैं। सो दीज आर फीचर्स। तो ये फीचर्स में से कौन सा, क्योंकि क्या होता है देखो, अगर आपके पास 100 कॉलम्स है, 100 कॉलम में से 100 के 100 यूज आएंगे क्या, नॉट रिक्वायर्ड। कौन से यूज करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट फीचर हम सेलेक्ट करते हैं। सो आइडेंटिफाई एंड देन अप्लाई फीचर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी। फीचर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी इज नथिंग बट sklearn, scikit-learn, आपने सुना होगा, माइट भी नहीं हो तो हम आगे देख ही लेंगे। These are specific there where we apply some engineering perspectives, कैलकुलेशंस है, पैटर्न समझना है ना, ये सब चीजें हम यहाँ पे उस पर लगाते हैं। वंस इट इज डन वी वैलिडेट द रिजल्ट। हम चेक करते हैं कि जो आउटपुट आया है क्या वैसे ही आया है, वैसे ही चाहिए था क्या, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे, दैट्स ऑल। वंस इट इज डन कि हाँ नाउ इट इज बेस्ट, ये होना चाहिए, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, क्या करेंगे हम, वापस से डेटा के पास में, पीछे का स्टेप देखो, वापस से डेटा के पास में, फिर से प्रोसेस करो। सो इट गोज ऑन साइकिल लाइक दैट। वंस इट इज कंक्लूडेड कि नहीं अब ठीक है, देन वी रिपीट द कंप्लीट प्रोसेस। एंड या तो रिपीट करो मतलब यहाँ पे, और या तो फिर क्या करो, पूरा का पूरा प्रोसेस पे आप आगे जाके उसे डिप्लॉय कर दो, उसे क्या कर दो, डिप्लॉयमेंट की तरफ में डिप्लॉय कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह से वो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ये हम चीजें सब सीखेंगे, डोंट वरी। नाउ अगेन डेटा रैंगलिंग। अच्छा, डेटा प्री प्रोसेसिंग में जब आओगे तो आपको हमेशा 3 पर्टिकुलर वर्ड्स रिपीटेटिव सुनाई में आ रहा होगा। डेटा रैंगलिंग होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, और डेटा मंजिंग, माइनिंग, नॉट मंजिंग, डेटा माइनिंग। ओके, समवन, किसी का माइक ओपन है, लेट मी सी। ओके फाइन, आई थिंक क्लोज किया। थैंक यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट। सो
यहाँ पे क्या देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा रैंगलिंग को ही डेटा मंजिंग कहते हैं। फिर डेटा क्लीनिंग, ये स्टेप्स है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्पेसिफिक 3 स्टेप्स है। कैसे स्टेप्स वर्क करते हैं देखो, डेटा रैंगलिंग, डेटा मंजिंग इज अ प्रोसेस वेयर रॉ डेटा जो है उसे यूजफुल फॉर्मेट में हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा अवेलेबल है XML डॉट में, डॉट XML फॉर्मेट में, ना इस पे एनालिसिस हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्मेट में। अब टेबल फॉर्मेट में करना है तो एक्सेल एक है या तो फिर क्या CSV के, तो इसे कन्वर्जन ऑफ दिस रॉ डेटा इनटू यूजफुल फॉर्मेट, ये प्रोसेस होता है डेटा मंजिंग और डेटा रैंगलिंग में। वंस इट इज डन, देन वी गो फॉर डेटा क्लीनिंग। जैसे मैंने कहा था कि रिमूविंग, करेक्टिंग ऑल द डिटेल्स विच इज रिक्वायर्ड, एरर्स निकालना, दिस आर ऑल इन डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग, जब डेटा रेडी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेटा माइनिंग के थ्रू उसमें से इंफॉर्मेशन, पैटर्न, कोरिलेशंस, इनसाइट्स, ये सब निकालते हुए यूजिंग स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, कंप्यूटर टेक्निक्स वी डिराइव दैट एंड देन अगेन वी गिव इट फॉर फर्दर फॉर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट्स। So this is